Okay, so fine. So we were talking about the acidic and basic oxides. We have done the examples of acidic as well as basic oxides. Now we'll talk about amphoteric oxides. So part C here is amphoteric oxides. What does amphoteric oxides mean? That is, they can react with acid as well as bases. So this write down, can react with acid as well as base. Okay. If we talk about the example, so all your metalloids, the elements which are metalloids in nature, they mostly form the amphoteric oxides. So generally, metalloids or elements close to metalloids can form amphoteric oxides. Like for example, we have BeO, beryllium oxide. So beryllium oxide can react with acid. This is your acid 2HCl to give BeCl2 plus H2. And beryllium oxide can also react with 2 moles of NaOH, which is a base, to give NaAlO2. Okay, this is known as sodium meta, very important reaction, meta aluminate. Like अभी नहीं याद करोगे तो later on याद करना ही पड़ेगा, कोई option नहीं है. Another example is zinc oxide. Similarly, zinc, if we are going to react it with HCl, it is going to give me ZnCl2. And in the same way, if I react Z or zinc oxide with NaOH, it is going to give me Na2ZnO2. That is sodium zincate. So these are the compounds which can react with both acids as well as bases. Guys, just 1 second, my screen is just stuck. Just give me 1 minute. That everyone, guys, just wait for 1 minute. Done writing?
Okay, for some reason this screen is getting stuck here. I'm adding one more section. Okay, I don't know what is happening here. That is neutral oxides. So neutral oxides, they are not going to react with acids as well as bases. किसी के साथ reaction नहीं होने वाला है. We'll write down will not react with acids or bases. Okay, दोनों में से किसी के साथ भी reaction नहीं होगा. For example, carbon monoxide, N2O, NO, OF2, etc. Like these are the four examples which you should remember and it do come in exam. Now, how the nature of oxides like strong acidic, yeah, weaker acidic, how they are going to vary in the periodic table. So next is your periodicity in the nature of oxides. So in this case, when we move from left to right in the periodic table, we know that non-metals increases. That means metallic character decreases and non-metallic increases. So basic nature of oxides will decrease and acidic nature will increase. So when we are moving from top left to right in the periodic table, first we come across with the metals and then we come across with the non-metals. So for non-metals, they are basic in nature. So that is why from left to right, basic nature of oxides decreases. And sorry, for non-metals, they are acidic in nature. So from left to right, basic nature of oxide decreases, but acidic nature of oxides increases. Okay. For example, I have Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. These are all your second period elements. So this is a metal. Metal oxides are strongly basic. So this is going to be strongly basic. MgO will be basic in nature. This is amphoteric. Okay. This is a non-metal. So it is going to be weakly acidic. This is going to be acidic. SO3 will be strongly acidic and this is also strongly acidic. From left to right, acidic nature of oxides are increasing and basic nature of oxides are decreasing. Write down this. Now again it is not scrolling down. What is happening here? The second part will be from top to bottom. Okay, when we are moving from top to bottom, in that case, metallic character increases. Okay, so basic character of oxide will also increase. So suppose I am taking LiOH, Li2O,
Na2O or K2O or Rb2O and CS2O. Don't write this. So these are all the oxides. And as we move from top to bottom, metallic character increases. That means basic character of these will also going to increase. So from left to right, basic character increases. Write down this. Now suppose you might come across with those kind of compounds where metal is same but their oxidation number is changing. So write down here, if the same element is forming oxides in different oxidation state, then greater the oxidation number, greater will be the acidic nature. Okay. For example, I have MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3 एंड Mn2O7. तो हमारे पास सारे के सारे सेम ही मेटल के एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, दिस विल बी +2, दिस विल बी +3, दिस विल बी +4, +6 एंड +7. सो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल के ऊपर उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर. So this is going to be more acidic, or you can say that the most acidic. This will be acidic. This is going to be neutral. This will be basic, and this will be more basic. Write down this. Done writing? Okay. Next लिखो. Oxides are anhydrides of oxy acids or hydroxides. What are oxy acids or hydroxides? These are basically those compounds which will contain one oxygen and at least uh, like it will have oxygen, hydrogen, and at least one other element, and that other elements can be anything. So it's a simple naming a compound which has hydrogen, oxygen, and at least any other one element. For example, if I am talking about H2SO4, H2SO3, it is a type of oxy acid. Okay, it has hydrogen, oxygen, and one other element. Okay, so this is anhydrides. Means anhydride का मतलब ही होता है removal of water. तो अगर आप इसमें से water निकाल दोगे, so I am writing -H2. तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपने रिमूव कर दिया तो you will left with SO2. So it is nothing but the oxide. The oxides are what? These are anhydrides. That means removal of water from oxy acids or hydroxides.
Suppose I take the example of H2SO4. From here also, if you remove one water, you will be left with SO3. If I take the example of H2CO3, and if I remove H2O, then I'll be left with CO2. Another examples can be if I have H3PO4, and if I remove one molecule of water here, I'll be left with P2O5, which is an oxide of phosphorus. If I have H3PO3, and if I remove the water here, so I'll be left with P2O3, which is again an oxide of phosphorus. Is it clear? Let me know. Write down this. संपदा, इन कंपाउंड से हम सिर्फ पानी को बाहर निकाल रहे हैं। H2SO4 से अगर मैंने वाटर को बाहर निकाल दिया तो 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो ये भी चला गया और एक ऑक्सीजन निकल गया। तो H2O जब बाहर निकाला तो बचा क्या? सिर्फ SO2, तो वो ऑक्साइड बन गया। तो ऑक्साइड इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, एनहाइड्राइड मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, सो इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ oxy acids. What are oxy acids? Compounds which contains oxygen, hydrogen, and at least one other element. तो ये सारे जो हैं H2SO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4, H3PO3, these are all the examples of oxy acid. Okay? अभी क्लियर है? अब हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, सपोज आई एम टेकिंग NaOH. अभी NaOH से अगर मुझे वाटर निकालना है तो मुझे 2 मोल्स लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 हाइड्रोजन चाहिए मुझे। तो यहाँ से जब आप वाटर निकालोगे, इट इज गोइंग टू गिव यू Na2O, बिकॉज आपने वाटर रिमूव कर दिया। तो ये हाइड्रोक्साइड का केस हो गया। CaOH वोल्ट वाइज में से अगर पानी बाहर निकाल दिया, मतलब 2 हाइड्रोजन अगर बाहर निकाल दो, एक ऑक्सीजन, सो यू विल बी लेफ्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड. Okay, so these are all the examples of hydroxides, from where hydroxides are NaOH, like which contains hydroxide ion, that is OH minus ion. So from there also, if you remove water, you will you will get the oxides only. Got it? Now oxy acids also show the acidic or the basic strength. So we'll be talking about that acidic and basic strength here. So for oxy acids, from left to right in the periodic table, non-metallic character increases. Therefore, acidic strength also increases. For example, if I am taking H3BO3, H2CO3, and HNO3. So out of all these, we are talking about these metals. So we are moving from left to right in the periodic table. That means non-metallic character increases. That means their acidic character is going to increase. So this is their acidic order. Okay. Second example also you can take. For example, I am taking H2SiO3. Then I have H3PO4. Then I have H2SO4. Then I have HClO4. So again, silicon, phosphorus, sulfur, and chlorine. We are going from left to right. So their acidic, non-metallic character is increasing. So acidic order is also going to increase. So this will be the order. Write down.
Now from top to bottom, we know that non-metallic character decreases. Therefore, acidic character, or you can say that acidic strength also decreases. For example, if I am taking HNO3, H3PO4, H3ASO4. Okay, so here these are all oxyacids only: nitrogen, phosphorus, and arsenic. So of course, top to bottom non-metallic character is decreasing, so their acidic nature is also going to decrease. So this will be the order of acidic strength. We can take another example also: HClO4, HBrO4, and HiO4. Again, top to bottom, non-metallic character decreases, therefore acidic character also decreases. So acidic order going to be like this. Write down this. Okay, so these were the orders, acidic strength order when the elements were different. Now, what if the element is same? Okay, so C is going to be if same element is forming oxyacids in different oxidation state, then greater the oxidation number of the element, greater will be the acidic strength. Okay, for example, I am taking HNO3, HNO2, nitric acid, nitrous acid, and H2N2O2. So if I talk about the oxidation number, जल्दी से मुझे oxidation number तीनों का निकाल के बताओ कितना आएगा, without wasting any time. I have told you in redox chapter that how to find out the oxidation number. Okay, so for here it is going to be +5, it is going to be +3, and here for hydrogen it is 2, then 2x minus 4 to the 8 is equal to 0. So 2x is going to be +6, that means x is going to be +3. यहाँ पे तो +3 है, ये गड़बड़ किया है क्या आप लोगों ने? 1 + x minus 2 to the 4 is equal to 0. So x is going to be +3. दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रहा है. मैम वहाँ 2 आएगा. कहाँ पे? मैम H2. हाँ H2 ही तो है यहाँ पे.
I have written 2 only, no? Okay. 8 लिख दिया ना गलती से. 2 2 जा 4 होगा. I'm so sorry. हाँ, ठीक है 4. So this will be plus 2. So this will be plus 1. Okay. So this is plus 1. So this is plus 5. This is plus 3 and this is plus 1. So if the element is same in the oxy acid in different oxidation state, then greater the oxidation number, greater will be the acidic strength. So order क्या होगा? Like this. This is your acidic order. In the same way आपको इसका भी करना है. जल्दी से सारे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना होगा. Okay, so it's 7, 5, 3 and 1. This will be plus 7, plus 5, plus 3 and plus 1. जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर. ओके. अगर मैं हाइड्रोक्साइड्स का वेरिएशन देखना चाहूँ कि हाइड्रोक्साइड्स का क्या होता है, यू नो दैट फॉर हाइड्रोक्साइड्स लेफ्ट टू राइट basic nature decreases and top to bottom basic nature increases. We have already done this in periodic table, so this is not anything new here. Got it? Okay. Now we will be talking about metallic bonding. Okay. So most metals are basically they are present in a closed packed structures. ठीक है. और आपको पता है कि metals have the ability to conduct heat and electricity, जो कि किसकी वजह से हो रहा होगा? Of course electrons की वजह से हो रहा होगा. Okay. So just write down here. Most metals crystallize in closed packed structures. The ability of metals to conduct electricity and heat must result from strong electron interactions among atoms. जो भी atoms वहाँ पे joined है उसमें strong interaction होना चाहिए. Okay. So bonding in metals is called as metallic bonding. It results from the electrical attractions among positively charged metal ions and
mobile delocalized electrons belonging to the crystal as whole. ठीक है, तो सॉलिड्स आपको पता है मेटल सॉलिड्स इन नेचर होते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होता है, बट स्टिल दे हैव mobile electrons. Mobile means which can move. Okay, so these mobile electrons which can be delocalized, और उन्हीं की वजह से metals they show they conduct electricity as well as heat. Okay, मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें, दो मॉडल से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक तो बैंड मॉडल होता है, एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है. So next is two models are considered to explain metallic bonding. A is band model and second one is electron C model. Okay, so now let's talk about band model. अब बैंड मॉडल में यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी मेटल में एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सेम एज योर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, है ना. तो यहाँ पे आपके पास इस नीचे वाले रेंज में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे. तो 1s हो गया, 2s हो गया, देन 2p हो गया, लाइक दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर. और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग जो है वो खाली पड़ा हुआ है. तो आपके विद इन द मॉलिक्यूल अगर इस बैंड के बीच का, ये दो बैंड्स हो गए, एक बॉन्डिंग बैंड्स हो गया और एक एंटी बॉन्डिंग बैंड्स हो गया, इन दोनों बैंड्स के बीच में अगर एनर्जी गैप नहीं है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इजिली यहाँ से वहां मूव कर पाएंगे. और जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक बैंड गैप से दूसरे बैंड गैप में मूव कर जाएंगे, तो ऑफ कोर्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इट इज गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो इसमें लिखो band theory, the highest energy electrons of metallic crystals occupy either a partially filled band or a filled band that overlaps empty band. What the statement is saying that या तो मतलब वही मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे या तो उन बैंड के बीच में कोई भी गैप ना हो. ओके, दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस बैंड थ्योरी द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर के ऊपर प्रेजेंट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड भी होगा, so highest energy electrons of metallic crystals occupy either a partially filled band, मतलब या तो completely filled होंगे या फिर partially filled होंगे. ओके, so अगर partially filled है तो भी वो मूव कर सकते हैं ऊपर, और completely filled है तो भी वो मूव कर सकते हैं. तो दोनों के ही केसेस में these metals can conduct electricity. कई बार क्या होता है कि इन बैंड्स के बीच में ओवरलैपिंग भी हो जाती है, लाइक दिस. मान लो इतना पोर्शन जो है इन बैंड, अगर एनर्जी लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे बैंड ओवरलैप हो गया. अगेन इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली फ्रॉम वन बैंड टू दी अनदर बैंड. ये आपके पास पूरा फील्ड बैंड है. ओके, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को जाने में इतना दिक्कत नहीं होगा. तो नेक्स्ट लिख लो यहाँ पे a band within which electrons must move to allow electrical conduction is called
कंडक्शन बैंड। ओके, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो अलाउ करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक बैंड गैप से दूसरे बैंड गैप में जाने के लिए, देन इट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट पॉइंट, the electrical conductivity of a metal decreases as temperature increases। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इन मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, द इंक्रीज इन टेम्परेचर causes thermal agitation of मेटल आयंस। तो जो मेटल आयंस है वो काफी ज्यादा मूव करने लग जाते हैं। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेटल के आयंस भी प्रेजेंट होंगे, सोडियम मेटल में सोडियम मेटल के आयंस भी होंगे, तो उसमें थर्मल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा कम कर देता है एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है इन दिस साइड डाउन। तभी आपने देखा होगा कि अगर वायर बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है तो इट स्टॉप्स वर्किंग, है ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो कभी भी बहुत ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम उसको बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। दिस इज द सेम रीजन, क्योंकि आपके पास जो मेटल है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे थर्मल एजिटेशन होता है और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाता, तो कंडक्शन उसका डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इसके आगे लिखो, दिस impedes या फिर बोल सकते हो stops the flow of electrons when electrical field is applied। Write down this। Okay, so all those elements which conduct electricity उनका बैंड गैप बहुत कम होता है। मतलब ये दो बैंड्स हो गए, इनके बीच का बैंड गैप एकदम मिनिमम होता है अगर वो कंडक्शन शो कर रहे हैं। अगर इंसुलेटर है तो इन दोनों बैंड के बीच का गैप ज्यादा होगा एंड इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाता है, तो ये क्या हो जाता है? इंसुलेटर्स। दैट मीन्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। in this write down, in an insulator the band gap is an energy difference that is too large electrons ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनके बीच का जो बैंड गैप है वो काफी ज्यादा होता है। तो यूजुअली जो आपके पास मेटल्स होते हैं उनके बीच का बैंड गैप मिनिमम होता है। ओके, या तो ऐसे होंगे यूजुअली या फिर थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो रहा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही इजीली मूव करेंगे एंड उनका कंडक्शन ज्यादा होगा। इंसुलेटर्स के केस में ये बैंड गैप काफी ज्यादा होता है। दीज आर योर इंसुलेटर्स। एंड देन आपने कुछ सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ा होगा। सेमीकंडक्टर्स में जो बैंड गैप होता है वो मेटल और इंसुलेटर के बीच का होता है। दिस इज नोन एज सेमी कंडक्टर्स। ड्रॉ दिस।
So these are all three different cases here. यूजुअली सेमीकंडक्टर्स जो है वो लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। मेटल के साथ कंपेयर मत करना, मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, बट सेमीकंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कंडक्टिविटी या फिर आप बोल सकते हो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, सो राइट डाउन हियर, सेमीकंडक्टर्स do not conduct electricity at low temperature, but increase in temperature is sufficient to excite some of the highest energy electrons to the empty conduction band। ठीक है, तो ऑल टुगेदर ये आपके पास फिल्ड कंडक्शन बैंड है, ये एम्प्टी कंडक्शन बैंड है। तो लो टेम्परेचर पे ये वर्क नहीं करेगा, बट जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रॉन्स विल गेन सम एनर्जी एंड दे विल बी एबल टू मूव फ्रॉम दिस फिल्ड कंडक्शन बैंड टू दी एम्प्टी कंडक्शन बैंड। सेकेंड मॉडल था आपके पास इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। लिखो जल्दी से ये। ओके, सो इसमें हम क्या बात कर रहे होते हैं, दिस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ये होता है कि मान लो मेरे पास ये एक मेटल है, इसका मेटल है लिथियम का, तो ऑफ कोर्स लिथियम प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में सी की तरफ प्रेजेंट है, Li प्लस भी है तो माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, इसमें यू विल हैव दिस इलेक्ट्रॉन सी। ओके, अभी क्या होगा कि अगर आप इस मेटल के एंड जो भी इसका एंड है उसको अगर आप कनेक्ट कर दो किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से, तो जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास एक्सटर्नल सोर्स है, मान लो आपने किसी स्विच में कनेक्ट किया, तो वहां से आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रैवल होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस मेटल में एंटर करते हैं। ओके, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब यही पास होते हैं दूसरे साइड से, एंड दैट इज व्हाई द होल सर्किट गेट्स कंप्लीटेड एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ओके, write down this, nothing is important here, you just have to understand this only।